सेंटी नहीं होना. Sergio Aguero now has as many Premier League hat-tricks as Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Daniel Sturridge, Jurgen Klinsmann, Gianluca Vialli, Louis Saha, Dirk Kuyt, Stan Collymore, Darren Bent, Samuel Eto'o, and Swindon Town combined. He has now surpassed Thierry Henry as the highest-scoring foreign player in the Premier League. Usama Javed, who do you think is the best ever foreign player to have played in the Premier League? I'm a Out of little bit nowhere. confused between Sergio Aguero and Thierry Henry, to be honest. Because if you see Thierry Henry playing, he was like more of an all-round player because alongside goals, he had assists doing his locker. And on his day, if if Aguero and Thierry Henry are playing like against each other, Thierry Henry is just a bit more probable to like put a big performance or big show as compared to Aguero. So I would go with Thierry Henry at last. That's actually quite a good reason. मैं भी Thierry Henry कहूँगा because I And think apart from that, if we look at the international career, I think that Thierry Henry has done a lot more for France as compared to हाँ अर्जेंटीना के अलग अपने अर्जेंटीना. मसले अपने मसले हैं, लेकिन एट द एंड थियरी होने ज़्यादा वाइब आती है कि मतलब वो बेहतर कर सकता है ऑन हिज हाँ. डे. This is Pressing Matters brought to you by On the Mic and it's the first time कि हम properly एक क्लब के बारे में बात करेंगे जो कुछ लोग कहते हैं more than a club. That's FC Barcelona. आज की न्यूज़ है, बल्कि कल रात की न्यूज़ है. Ernesto Valverde is finally out. सारे हैशटैग्स काम आ गए हैं. सारी जो सऊदी अरेबिया में उसको बैठ के बू किया था वो काम आ गया. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाइंड रियली सरप्राइजिंग इसके टाइमिंग बहुत अजीब है. बारसा प्लेड क्वाइट वेल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड सुपर कप के सेमीफाइनल में. और मतलब कि ऑब्वियसली रोमा और लिवरपूल की हम बात करेंगे, लेकिन तब बंदा अगर कभी सैक करना ही था तो उन परफॉर्मेंसेस के बाद, चलो रोमा के बाद नहीं तो लिवरपूल के बाद बनता है. लेकिन अब जाके व्हेन बारसा प्लेड पुट इन प्रोबेबली देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन, तो उसके बाद सैक करना क्या क्या सोच रहा था बोर्ड? So basically, first we would have to look at the backroom problems or the board level problems. अगर हम थोड़ी सी बार्सिलोना की हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो पहले बार ग्वार्डियोला के टाइम में बार्सिलोना का प्रेसिडेंट था यूएन लपोर्ते, ठीक है ना. यूएन लपोर्ते उसका जब दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद आए हमारे पास सेंड्रो रोजेल. या अब यूएन लपोर्ते का जो बेसिकली पूरा आइडियोलॉजी जो उसका फ्रेमवर्क था वो ये था कि ला मसिया के प्लेयर्स लेने हैं, उनको डेवलप करना है, उनको आगे लेके आना है. बेशक बड़ी साइनिंग्स करनी है, लेकिन मेन फोकस जो है ना बारसा वो ला डीएनए. मसिया बार्सिलोना डीएनए वो होगा. लेकिन एज सुन एज यूएन लपोर्ते went away, Sandro Ozil came in. Sandro Ozil was more like inclined towards having Galactico signings, like signing big name players. And उसके बाद से आपने देखा कि Alexis सबसे पहले नेमार Sanchez, साइन किया, एलेक्सिस सांचेज, और फिर अब रिसेंटली ग्रीजमैन की साइनिंग, फैब्रिगास भी आया था. और बीच में सुआरेज. इस मतलब सैंड्रो रोजेल ने मतलब ट्राई किया कि बड़े नाम लें, प्लेयर्स खरीदें इंस्टेड कि अपने डेवलप करें. तो बोर्ड लेवल पे ये हुआ कि मतलब थोड़ी आइडियोलॉजी चेंज हुई. दे मूव्ड अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड क्राइफ आइडियोलॉजी और द बार्सिलोना डीएनए. एंड उस सब के बीच इन लोगों को एक मैनेजर ऐसा चाहिए था कि जो नीचे लगा रहे, मतलब बात सुने इनकी कि जैसे ये चाहते हैं वैसे होता रहे. एंड वॉलवर्डे वाज यू आर टॉकिंग अबाउट बार्टोमेउ. या तो वॉलवर्डे बिल्कुल ऐसा मैनेजर था कि मतलब सबके नीचे लगा रहे. तो इन्होंने इसके साथ परसिस्ट किया. पहले रोमा से हारे हैं मतलब 2018-19 सीजन के अंदर. उसके अंदर ये 3-0 आई गेस 4-1 जीते हैं पहली लेग. उसके बाद रोमा ने 3-0 कम बैक कर लिया. तो इन्होंने फिर उसके साथ परसिस्ट किया. फिर उससे अगले सीजन सेम स्टेज सेम रिजल्ट, और सेकंड लेग फिर लिवरपूल से हारे हैं 4-1. जबकि इन दोज मैचेस इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ ट्वीक्स, टेक्टिकल ट्वीक्स, और इवन थोड़ा सा मतलब कुछ भी चेंज करते हो तो मतलब रिजल्ट कुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट, लेकिन नहीं कर सका. तो मेरे ख्याल से तो अगर रोमा के बाद नहीं किया सैक तो लिवरपूल वाले मैच के बाद ज़रूर कर देना चाहिए था सैक. चले तब भी ना करते तो सीजन के एंड पे सैक कर देना चाहिए था. आई हैव नो आइडिया दैट व्हाई डिड दे परसिस्टेड विद हिम आफ्टर द लॉस इन लास्ट ईयर सेमीफाइनल, बट समहाउ दे स्टिल तो ये जो रोमा और लिवरपूल वाली बात है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट. ठीक है, मैं ठीक वेलवर्डे को लाइक आई डोंट थिंक ही इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब राइट नाउ, बट आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि चलो रोमा वाला मैच निकाल दो. रोमा वाला अवे जो उनकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज जस्ट एन एक्सट्रीमली पुअर ए टैक्टिकल शोइंग, एंड ऑल्सो के प्लेयर्स जस्ट कम्प्लीटली वर्ंट देयर, डिडंट शो अप. लिवरपूल वाले में वन कुड आर्ग्यू के 3-0 जो भी जिस तरह भी हुआ, मेसी मैजिक या जो भी हुआ, अगर वो डेम्बेले चांस ना मिस करता एंड पे, जो लास्ट सेकंड चांस था जो 4-0 हो सकता था आराम से,
तो ये बात कहीं से हो ही ना रही होती। और दूसरा कि सेकंड लेग में हाउ कुड ही हैव सेट अप डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, और 2-3 1-on-1 चांसेस बने थे विच अगेन द प्लेयर्स मिस्ड। और जैसे कि हमें पता है फेमसली नाउ जॉर्डी अल्बा स्टार्टेड क्राइंग एट हाफ टाइम इवन दो दे वर ओनली लूजिंग 1-0, और अभी वो एग्रीगेट पे 3-1 जीत रहे थे। मतलब ये मैंटेलिटी, ठीक है मैंटेलिटी कुड कम फ्रॉम द मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर लीड्स विद द मैंटेलिटी, लेकिन जब प्लेयर्स ही इस तरह के हैं और कॉन्ट्रास्ट है विद लिवरपूल जो 3-0 फर्स्ट लेग हारे हैं और यर्गन क्लॉप अंदर जी सादियो माने और जीनी वैनआल्डम का कह रहे हैं कि आई थिंक वी आर गोइंग टू डू इट, और यहाँ पे जॉर्डी अल्बा लीड में होकर रो रहा है। तो डू यू थिंक कि दिस वाज मोर डाउन टू द प्लेयर्स नॉट शोइंग इनफ कैरेक्टर, या फिर सीधा वैल्वर्डे की गलती थी? पहली बात तो ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, इट्स वन ऑफ द लाइक टॉप 5 क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर द लास्ट डेकेड और इवन द होल सेंचुरी। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, इट्स नॉट कि आपने एक चांस बनाया, 2 चांस बनाए, आपने वो चांसेस लेने हैं। इट्स अबाउट कि यू डोमिनेट द गेम, यू कंट्रोल द गेम। सो इन केस ऑफ बार्सिलोना आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो डेम्बेले ने वो चांस मिस कर दिया, सुआरेज़ ने वो चांस मिस कर दिया, इसने ऐसे नहीं किया। बार्सिलोना की जब बात हो रही हो तो बार्सिलोना को गेम डोमिनेट करनी है, लेकिन बार्सिलोना वो नहीं कर सकी। और फिर आपने बात की कि प्लेयर्स ये नहीं कर सके, शायद मैनेजर कह रहा हो कि इस तरह आप इम्प्लीमेंट करें, मैनेजर्स ने कुछ टेक्टिकल चेंजेस किए हों लेकिन प्लेयर्स इम्प्लीमेंट ना कर सके हों विद इन द गेम। तो बात ये नहीं है। ओवर द कोर्स ऑफ 2 सीजन्स ऑफ वॉल्वर्डे you could see a common theme that Valverde was very rigid with his tactics and his instructions in through in the game. इस तरह की आपको बहुत सारी गेम्स मिलेंगी जिसके अंदर मतलब बार्सिलोना वाज अंडर परफॉर्मिंग, मतलब कह लें कि वॉल्वर्डे ही वाज लाइक 1-1 लव और यू कैन से 1-1 ड्राइंग, लेकिन वॉल्वर्डे वाज स्टिकिंग विद दिस पर्टिकुलर गेम प्लान राइट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। एंड जब देखा कि अब लीड जा रही है या बिल्कुल जब गेम हाथ से निकल गई तब जाके कोई चेंज वगैरह की, टेक्टिकल चेंज की, सब्स्टिट्यूशन की। तो मतलब ओवर द कोर्स ऑफ 2 years और 2.5 years ऑफ हिज टेन्योर वॉल्वर्डे वाज मोस्टली मेकिंग चेंजेस। जब आप कह मतलब कि सकते ही हैं वाज गेम रिएक्टिव मतलब रादर देन प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, मतलब कि जब गेम हाथ से निकल चुकी है, मतलब आप प्लेयर को टाइम दें, मतलब आपने सब करना है बाहर से, अगर 30-35 मिनट्स दें प्लेयर को। अब वॉल्वर्डे के मोस्टली सब सब्स होते थे, मतलब 70th मिनट में आ रहे हैं, 75th मिनट में आ रहे हैं। इवन द सेमीफाइनल अगेंस्ट बार्सिलोना जब तक 2-0 था, वॉल्वर्डे का सेम टू सेम गेम प्लान सब कुछ वही। 2-0 पे आके उसको सब कर देना चाहिए था। जब वाइनआल्डम ने 3-0 वो इक्वलाइज किया उसके बाद उसने जाके सब किया पहला। तो दिस सही बात सेज है। ऑल अबाउट इज। अच्छा, ये तो चलो बात ठीक होगी, इट्स इनएक्सक्यूजेबल द वे दे लॉस्ट दोज 2 गेम्स। मतलब एक दफ़ा होना ही इतना अजीब होता है। आई डोंट थिंक पीएसजी वाले ये जो मैच है जो बारसा वर ऑन द राइट साइड जो 6-1 रेमोंटाडा जो है वो एक हुआ था, वो आपको एक रीसेंट एग्जांपल मिलता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कोई इस तरह का एग्जांपल मिलता है कि एक साइड ने पहली लेग से इतनी बड़ी जो है वो लीड जो है वो ब्लो कर दी है, बट दे डिड इट ट्वाइस इन अ रो, लाइक 2 सीजन इन अ रो, जब पता था कि पिछले साल हो चुका उन्होंने फिर किया। दैट्स इनएक्सक्यूजेबल। बट डू यू थिंक कि वेलवर्डे के साथ थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है? ही इज़ नॉट बिन गिविंग द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स। मैं एमरी के बारे में भी ये बात कर रहा था कि एमरी एंड वेलवर्डे माइट नॉट बी the best managers in the world, ठीक है, they might not even be the best managers for their respective clubs like Arsenal or Barca के लिए, clearly there are better managers out there for those clubs, लेकिन they have all, like both of them, all नहीं, they both of them shown कि they've given it their all for the club, ठीक है, उन्होंने जान मारी है पूरी। they have always been incredibly respectful, कभी भी आउट ऑफ लाइन नहीं हुए, कोई बदतमीजियाँ कुछ नहीं किया। they have maintained the decorum of the club, कभी फैंस को कुछ नहीं कहा, लेकिन एट द सेम टाइम they've gotten the most abuse। एमरी के एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया, वेलवर्डे को तो बस उसको रोल ही दिया ना पकड़ के। तो और ऊपर से जेवी और इनिएस्टा, मेसी की अभी जो अगर इंस्टाग्राम पोस्ट, उमर कुड यू पुल अप मेसीज इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर वेलवर्डे, और सुआरेज ने भी किया। तो क्लियरली ये जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं बारसा के, जो 4 बड़े लेजेंड्स हैं ऑफ द पास्ट 10 years, इन्होंने जब वेलवर्डे की इतनी रिस्पेक्ट वगैरह शो की है, तो डू यू थिंक कि बारसा मतलब समथिंग मस्ट बी देयर ना, कोई अच्छा बंदा है या कुछ तो उसने किया है? What fans can see is that what are the players doing on the pitch. If players are not performing, the team is not performing, fans would obviously blame the players and the manager. So you cannot say anything to fans because fans are there for the game and they want their team to perform. अब जो बार्सिलोना की बात है ना, बार्सिलोना के जो मैनेजर की सीट है, दैट्स लाइक द हॉटेस्ट सीट, इफ नॉट द हॉटेस्ट, वन ऑफ द टॉप 3 हॉटेस्ट सीट्स इन या द वर्ल्ड, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू बिकम अ बार्सिलोना मैनेजर, यू मस्ट बी श्योर कि अगर आप वहाँ पे 10 में से एक गेम भी हारते हो तो यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। बिकॉज ये मैं आज ही कोट पढ़ रहा था कि पेप गार्डियोला सेड कि एट बार्सिलोना द स्टेक्स आर सो मच हाई कि विनिंग द ला लीगा इज़ नॉट इनफ।
So if you are winning it, it's not enough, and you have to win either Copa del Rey, UCL, something alongside it. मतलब at least Either double. That is at least double. outrageous. That's the criteria. Outrageous. La Liga alone is not enough for Barcelona. So number one, if you are coming to Barcelona, you must know कि आपको criticism फेस करना पड़ सकता है. बेशक आप अच्छा परफॉर्म करें, 1 या 2 मैच आपने बुरे खेले हैं, तो फैंस would be right in front of you facing, you would have to face the fans. तो ये पहली बात. अब इसके बाद हम आते हैं उसके ऊपर कि जो बोर्ड ने खराबियाँ की हैं. अब आपने बोला कि मेसी ने उनको प्रेज़ किया, सुआरेज़ ने उनको प्रेज़ किया, सारे प्लेयर्स मतलब कह रहे थे कि वॉलवर्डे ने काफ़ी अच्छा मतलब ओवर 2 years परफॉर्म किया. अब जो बार्सिलोना का बोर्ड है ना, द प्रेसिडेंट एंड ऑल द मेंबर्स इन्वॉल्व, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर. ठीक है ना. अब हम सुनते हैं कि फ़लाना ट्रांसफ़र र्यूमर है, फ़लाना प्लेयर आ रहा है, फ़लाना जा रहा है, लेकिन जो अंदर की बात होती है वो सिर्फ बोर्ड जानता है, मैनेजर जानता है कि मैनेजर के पास कितनी पावर है कि वो अपनी पसंद का प्लेयर खरीद सकता है, और बोर्ड के पास कितनी पावर है. आई पर्सनली थिंक कि इस केस में बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, क्योंकि एनी सेन मैनेजर और कोई भी टेक्निकल या डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होगा, ही नोज के सुआरेस के होते हुए ग्रीजमैन पे एटलीस्ट ये 90 और 100 मिलियन पाउंड स्पेंड करने की तुक नहीं बनती. मतलब क्योंकि दे द सेम पोजीशन. व्हाट बार्सिलोना वाज लैकिंग वाज अ प्रॉपर विंगर और अ प्रॉपर राइट बैक. उन दोनों में से कोई प्लेयर नहीं आया. तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रॉपर फुटबॉलिंग डिसीजन अगर लेना है तो कभी बार्सिलोना ग्रीजमैन ना खरीदती, क्योंकि वहाँ उनके पास सुआरेस था. अभी बोर्ड रूम तक पहुँचते हैं, बट बिफोर दैट, क्योंकि मैंने वो सेपरेटली कवर करना है, आई जस्ट वांट टू गो ओवर हिज रिकॉर्ड एंड टॉक टू यू अबाउट कि ठीक है स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, लेकिन some context about where the club was when Valverde came in. So if people have forgotten, things weren't that great when Luis Enrique left. ठीक है. जैसे ही Valverde अंदर आया है, Neymar चला गया after like 4 weeks. So now you have one of the best players in the world going, और आपका Iniesta जितना भी अच्छा हो obviously physically decline कर रहा है and he is about to leave. आपके जैवी जा चुका है, आपकी जो core टीम थी जिसके अंदर से आपने इतना, जिसमें से आपने इतना कुछ जीता था, अब इवन द ट्रेबल विनिंग टीम जिसमें मैशरानो था, आपका नेमार था, इनिएस्टा वाज एट हिज पीक, जैवी इवन पुट इन अ फ्यू मिनट्स, रैकिटिच वाज एट हिज पीक. ये सारे डिक्लाइन कर चुके हैं, कर रहे हैं या जा चुके हैं क्लब से. उस सिचुएशन में वेलवर्डे आया, नेमार चला गया, उस सिचुएशन में आके एंड देयर साइनिंग्स वर पॉलिनियो, और फिर आगे जाके उन्होंने कौन लिया था उस सीज़न, लाइक बाद में जाके अगले सीज़न केविन प्रिंस बोटेंग भी लिया था, बट लाइक पॉलिनियो टाइप प्लेयर ले रहे हैं वो. और उसके बावजूद इन द फर्स्ट सीज़न बारसा गॉट 93 पॉइंट्स इन द लीग. दे हैड 28 विन्स, 9 ड्रॉज एंड 1 लॉस. दे स्कोर्ड 99 गोल्स and only had 29 goals conceded, मतलब a goal difference of 70, which is amazing. और आई थिंक कि उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आई थिंक इट्स अमेजिंग व्हाट ही डिड. हाउ मच डू यू थिंक, लाइक वो आर्ग्यूमेंट तो आ जाती कि मेसी मैजिक था सारा और मेसी के ऊपर बहुत ओवर रिलायंट था, बट आई स्टिल थिंक कि 93 पॉइंट्स इज नथिंग टू लाफ एट. I do agree with you in this case. I was coming to the point that he does get unfair criticism to some extent, because people or the fans don't know what is going on at the boardroom level. So for that, with the signings you mentioned like Paulinho, Kevin Prince Boateng, still he managed to get a very good season, especially in his first season at Barcelona. I remember they lost Levante, I think, second last और वो मेसी उस मैच डे स्क्वाड में नहीं था in that season. So but people will say कि उसको मैच डे स्क्वाड में मेसी नहीं था, इसलिए that's the only game they lost, so that points towards their over reliance on Messi. But I do have sympathy for Valverde. I won't say that he was a complete failure as a manager. It only came down to those knockdown 2 games, Roma and Liverpool, because of which the fans of Barcelona or the people in general like slate him very highly. Else, if you look at the overall tenure, he did pretty well, keeping in view that Neymar left most of the... Umar's actually pulled up a very interesting article here. 20 signings at Barcelona, and I didn't know Ernesto Valverde signed 20 players. नीचे जाना हूँ मैं. कौन है? अच्छा, ये some guys who haven't even played, like जो एमरसन वगैरह आए थे जिन्होंने खेला भी नहीं है. But Paulinho is ranked number 4 or something, which goes to show how much of a shit show it was. Like, oh, we forgot Philip Coutinho आया था. Paulinho actually played good. Number 6, sorry. Philip Coutinho आया था. He bought Philip Coutinho. He was supposed to plug in the gap for Iniesta वाला जो hole था. Man, that's another transfer failure as far as Barcelona is concerned. Coutinho was never supposed to be a left winger. He was never supposed to be a winger.
हाँ, But they I bought know. him as a winger. They played him out of position for like 2 to 3 months, and after that they figured out that he's not working out there, and then they shifted him to at the Iniesta position or so in the midfield. Amar, could you pull up his Wikipedia पे probably होगा his overall record as Barcelona manager? Like if you just search Ernesto Valverde Wikipedia or something, उसका आ जाएगा win percentage वगैरह क्या है. I'm guessing काफ़ी high win percentage है, but then you're also right कि उसके बावजूद वो जो 2 ties थे they were just so huge. और generally भी wins के साथ साथ Barcelona we can both agree एक देखिए different club है. असल में बात ये है कि आप पहली लेग 4-1 जीत के दूसरी लेग में आप 3-0 खा रहे हैं. एक बार हो जाए तो आप कह सकते हैं कि जी दूसरी टीम बहुत मोटिवेटेड थी, हम ऑन द डे हम नहीं कर सके. लेकिन अगर 2 साल कॉन्स्टेंटली ये हो ना तो फिर मसला होता है. फैंस उसकी वजह से इनके पीछे बहुत हैं. हाँ सही 2 है. साल कंसेक्यूटिवली ये हुआ और है. फिर बार्सिलोना एक थोड़ा फर्क क्लब है इन द सेंस के बिकॉज ऑफ क्रॉयफ एंड गार्डियोला इट्स नॉट इनफ टू जस्ट विन, दे हैव टू विन अ सर्टन वे, राइट. तो उसके साथ साथ तो आई थिंक दोनों बॉक्सेस जो है वो टिक नहीं करा था. और स्पेशली दिस सीजन आई थिंक आई एग्री विद यू. लास्ट सीजन के एंड पे ना रोमा के बाद आई डोंट थिंक बनता था उसको सैक करना, लिवरपूल के बाद बनता था, पक्का बनता था समर में लिवरपूल के बनता था. आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब फॉर क्लब हु कुड हैव गॉन इनटू क्राइसिस. फिर 2 लीग टाइटल जीत गए. A lot of that was down to Messi, yes, but still, the manager can't be discounted. It's right here. So the win percentage of Ernesto Valverde at Barcelona is 66.9%, which is almost 67. That's quite impressive actually. अगर आप सिर्फ उसको देखें, अभी मैं कल परसों पढ़ा था कि गार्डियोला का ओवरऑल करियर स्टेटिस्टिक में विन परसेंटेज 73%, और 67 और 73 में काफ़ी फ़र्क है. परसेंटेज पॉइंट्स टर्म्स में कम है लेकिन ओवरऑल काफ़ी है. लेकिन फॉर समवन हु इज़, जैसे कि कहा गया है कि फेलियर है और लाइक भगा दो उसे, तो वो वाला सीन नहीं है. देखिए यहाँ पर यह बात आती है एक्सक्यूज मी कि यहाँ पे अपने खाली विन परसेंटेज नहीं देखनी. इफ़ यू लुक एट द स्टाइल ऑफ बार्सिलोना ओवर द लास्ट 2 years in general, in the first season he used a 4-4-2 rigid formation for most of the season, That worked well. and that worked well as far as defense is concerned. For a time being, Barcelona actually looked like a very good defensive team. They kept a lot of clean sheets that जैसे ही season. 4-3-3 पे आए वो सारा मसला बढ़ गया फिर से. But as soon as they switched to the 4-3-3, they were neither that much fluid as before when they used to play passing or tiki-taka football, and then they were neither as much defensively rigid as they were in his first season. So ना फिर आपको डिफेंस अच्छा मिल रहा है ना आपको अटैक अच्छा मिल रहा है, तो फिर मतलब फैंस कुछ तो डिमांड करें ना, मतलब कुछ तो हो. And in most of the games, it was Messi who was literally bailing out Barcelona. Like that cross That's happened a diagonal pass lot. to Alba, a pullback, and either a Suarez or Messi shot. That was यहाँ like, फिर अकेला बस फ्री किक मार के यहाँ फ्री किक या फ्री किक्स. सो मोस्ट ऑफ द गेम में ये हो रहा था. तो मतलब इस तरह तो नहीं ना, मतलब बेशक आप गेम जीत रहे हैं, चले मेसी ने ये गोल कर दिया, कोई सुआरेज ने कोई बहुत टॉप क्लास गोल कर दिया, ये हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार. लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म फैंस और समझदार फैंस हम समझते हैं कि ऐसे हमें नहीं चलेगा मतलब. और इस सीज़न स्पेशली हमने पहले बात की कि ही ब्रॉट इन प्लेयर्स लाइक, ही नहीं वैसे बारसा ब्रॉट इन प्लेयर्स लाइक, क्योंकि उधर ऑब्वियसली बोर्ड पे बहुत डिपेंड करता है और उनका वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह भी कोई नहीं है. द क्लब्स एमलेस विच विल टॉक अबाउट इन जस्ट अ बिट. लेकिन दे ब्रॉट इन प्लेयर्स लाइक पॉलिनियो, विडाल, अल होल होस्ट ऑफ प्लेयर्स जो खेले भी नहीं है, एमरसन और ये वो दूसरे फिलिप कुटिन्यो. और बट बाद में आके इस सीज़न लाइक समर में ठीक है, ग्रीजबन वॉज नॉट ए स्मार्ट बाय बिकॉज दे हैड सुआरेज, but they also got Frankie de Jong, who I think is one of the best upcoming midfielders in the world. sure. तो उसके साथ भी I mean you have 2 exciting players coming in. A manager's job like Zidane और Carlo Ancelotti की जो सबसे strength ये है कि they always find a way to get all the best players on the pitch. Like 11 बंदे खिलाने हैं, सबसे 11 अच्छे खिला लेंगे किसी तरह and still make it fun to watch. Valverde ने ग्रीजमैन को बाहर फेंका हुआ था लेफ्ट पे. डी योंग को पता नहीं लाइक क्या हो रहा था, बुस्केट्स की जगह वो आ जाता था, बट लाइक बस इतनी साइनिंग्स के बाद भी जस्ट वाजंट क्लिकिंग. और इस सीज़न इफ़ Valverde had stayed and they had continued into the second half of the season like they played in the first half, they would have only got 80 points, which I don't think is enough for a club like Barcelona. तो इस सीज़न तो I agree कि उसको जाना चाहिए था, but now let's come down to the board, क्योंकि Valverde तो एक scapegoat था ना, कि मतलब अगर जो मर्जी हो जाए, अगर बोर्ड यूनाइटेड वाला सीन है कि ठीक है ओले गनर सोल्शायर इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब, बट इशूज़ आर फार ग्रेटर देन जस्ट ओले गनर सोल्शायर, तो वो चला भी जाए तो मसले तो रहेंगे. तो वेलवर्डे अब चला गया, लेकिन बार्सिलोना जस्ट सो पोरली रन, मतलब कि पूरा सागा ही आपको दिखाता है. कतर गए हैं जावी से मिलने, न्यूज़ लीक होगी किसी तरह, और फिर वो कहते हैं वो नहीं जी हम तो डेम्बेले को मिलने आए थे जिसको ऑपरेशन हुआ है.
और डॉक्टर बन गया एकदम से, और फिर जैवी वाला सारा लीक हो गया ना, और फिर पता लगा जैवी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जैवी सेड नो, देन दे वेंट टू कूमन रिजेक्टेड देम, पोचेटिनो रिजेक्टेड देम, मतलब आप रुल रहे हो हर जगह और न्यूज़ आई जा रही है। और वेलवर्डे हो के आपको आपके लाइक क्या, इमेजिन इफ यू आर एर्नेस्टो वेलवर्डे एंड दिस न्यूज़ इज कमिंग आउट, आपकी तो कोई इज्जत नहीं रही ना। तो आई थिंक दिस इज poorly managed That's and I it heard just कि shows. Xavi is waiting for the current board to be changed. Like he's हाँ waiting ही for the current या president to दैट्स be व्हाट, changed. बट फिर भी नो तो होगी ना। सो आपकी Yeah, no is a न्यूज़ क्या no, आ रही है कि for नो, sure. जैवी ने नो कर दिया, कूमन ने नो कर दिया, दो आपके जो एक्स प्लेयर्स थे, और फिर पोचेटिनो ने नो कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस, एस्पेनियोल के साथ जो उसके टाइज थे, और फिर वेलवर्डे को बस फिर एबिडाल और वो दोनों लाइक वापस गए, और बस एर्नेस्टो वेलवर्डे अपना ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, और फिर सलाम दुआ होगी फुल ऑकवर्ड सी। तो और अब जैवी चलो नहीं आ रहा बिकॉज वी नो who's come in, but what did you think about Javi's appointment if he was appointed? First of all, Xavi took a very good decision for not becoming a Agreed. Barcelona at this stage, because at this stage Barcelona is a much greater mess what it seems on paper, because Absolutely. at this moment, as I said before, take out Messi from the team and this Barcelona side isn't even worth watching. Like, it's so boring. So even if Xavi comes at this stage, he won't at first have enough time to like implement his strategy or whatever his game plan is. People think कि मतलब वही just बातें हैं कि जी योहान क्राइफ फुटबॉल बार्सिलोना डीएनए जी जावी आ जाएगा सब कुछ सेट कर देगा। देखिए इस तरह से गेम नहीं चलती, इस तरह बात नहीं बनती। Genuine. A manager needs to come in, he needs a good amount of time, like 6 to 7 months, to implement his gameplay, his tactics and everything. And apart from that, Xavi is still young. Like he has been in management for like 1.5 years, and even at the in the Qatari league, I guess he's managing Al Saad. His team is still second. So like he's not killing it by any means. Yeah, of course. इवन चलें अगर हम कहते हैं किसी यूरोपियन लीग में चलें कह ले कि इराडी वाइस के अंदर है या बुंडस लीगा में कहीं भी, ये तो बहुत लो है। मतलब दिस इज ये नॉट काफी इवन low दिस level इज league है, नॉट उसमें इवन second है, तो मतलब इट्स क्लियर कि द गाय नीड एक्सपीरियंस फॉर नाउ, उसको भी नहीं आना चाहिए। और एक और रीज़न है, एंड दिस इज समथिंग दैट उमर जस्ट पुल्ड अप एन आर्टिकल जिसके अंदर लिखा हुआ है, व्हिच इज़ वन पॉसिबल रीज़न कि ही ऑल्सो सेड के लाइक ही हैज़ रिस्पेक्ट फॉर वेलवर्डे, और वो इस पोजीशन में नहीं लाइक वेलवर्डे को नहीं डालना चाहता और अपने प्लेयर्स को भी नहीं, लाइक फॉर द क्लब दैट ही इज़ प्लेइंग वो एक जगह कम्पीट करें, एंड वो अपनी तरफ से ही हैज़ टेकन अ प्रिंसिपल स्टांस। लेकिन बार्सिलोना तो बिल्कुल ही जो है ना दूसरी तरफ चले गए हैं। माई प्रॉब्लम विद जैवी इज़ कि ही हैज़ नो एक्सपीरियंस व्हाट्सोएवर, मतलब वही जो हमारी बात हो रही थी। अब लैम्पार्ड के पास ठीक है, लेट्स रन डाउन लिस्ट ऑफ कोचेज जो अभी अप एंड कमिंग है। लैम्पार्ड के पास डार्बी था, सीजन जैसा भी किया, दैट्स अनदर इशू। Arteta worked directly as a coach under Pep Guardiola. There is a difference in being a player under Guardiola and being a coach. Zidane had direct experience coaching the Real Madrid Castilla and then working under Ancelotti. Right? And then Pep also toured the world to rack up his footballing knowledge before he became the coach of Barca B. और Barca B के लिए he did really well. I think they were top of their division at the time. ठीक है, वो जब एक season उसने किया था. And also the problem with thinking that a former club legend is just going to automatically become a great manager for the club because he's a legend is just so stupid, I think, because you don't become a great manager because you get the club. You become a great manager by being a great manager. ठीक है, और Pep और Zidane, Gattuso has failed miserably. हाँ, so for Thierry Henry has failed miserably. for every Zidane Gary and Neville Pep, too. you have Alan Shearer, Graham Souness, Gattuso, Alan Shearer, इस टाइप के और होते हैं. The reason Pep and Zidane, हाँ, Solskjaer. The reason Pep and Zidane are so successful are not because they're club legends, it's because they're just great managers. और वो exceptions हैं. तो वो तो चलो अब साइड पे हो गया. I'm glad Javi has, for whatever reason, said no. There was a smart decision. Who's been appointed? Qique Setien, as the news has probably like news break hogi ab tak. What do you know about the former Real Betis manager? So Qique Setien is, you can say, one of the disciples of Johan Cruyff. Yeah. He himself said that he admires him, he liked his teams and his style of play, and as far as his personal tactics are concerned, he himself like promotes possession-based attacking and a risky football strategy. So what I am getting, like my first impression from what he will bring to Barcelona is that when it's coming to the attack, Barcelona would be very, very attractive, and once again we would see entertaining football from their side.
But as far as defense is concerned, it would be same. So same that's one of the old things. For everyone who wants to get to know Qique Setien, Umar, could you please search Qique Setien, like Setien, and then Miguel Delaney. So that's Miguel and then Delaney. So there's an article by Miguel for The Independent. Like this was done 2 years ago, I think, when he was Real Betis manager. And वो काफ़ी आपको बताता है कि सेटियन किस तरह सोचता है, व्हाट डज ही थिंक अबाउट फुटबॉल, क्या उसकी मतलब थिंकिंग है, व्हाट ही विल ब्रिंग टू बार्सिलोना. सो आई डेफिनेटली लाइक इफ यू वांट टू गिव इट अ रीड, So in terms of Qique Setien experience, he has spent a lot of time in the lower leagues. Absolutely. He started off from Racing Santander first as a player, and then after retirement he went for beach football for like 6 years. Then he returned back as a assistant manager for the first time in this profession of Racing Santander. There he stayed for like 6 years, and afterwards he went on to manage a third tier club like हाँ Lugo, काफ़ी लोअर Lugo. लीग्स में था. And after Lugo he managed Las Palmas. no in between he managed an international side Guinea. Okay. And another club too, and after that he came to Las Palmas. So that was his first experience of La Liga. And he finished at 11th spot in his first season with Las Palmas. And what I heard is that Las Palmas played some very, very exciting football in that season. Although they conceded an awful lot of goals, but they finished 11th. But ultimately they scored a lot of goals. I don't remember the exact number. But We what I could heard pull is it that, up for what कौन सी लीग सीजन था? I think 15, 16. 15, 16 or 16, 17. La Liga 15/16 टेबल पता लग जाएगा क्या था. सो वो लाइक जनरली ये बात सामने आई है फ्रॉम व्हाट आई, बिकॉज मैं आई नो अबाउट कीके सीधी बात सेटियन. करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप तुम 3 गोल करोगे ना हम 4 तो हम करेंगे. 4 गोल हाँ करेंगे. इसकी ये स्ट्रेटजी है. हाँ. So one of the things that comes up is के किधर गई Las Palmas? Is this 15/16 ऊपर जाओ? No, this is 14/15. Yeah, 15/16. Yeah, so that's Las Palmas. Yeah, so one of the things that comes up, this is interesting because it says कि इन्होंने 45 goals, 45 goals scored, 53 conceded. 3 considered. नहीं, just go back. Yeah, so that's 45 goals scored, 53 conceded. अब ये Usama, one of the things that comes up is कि जो भी मैंने इसका लीग सीजन देखा है ना, लास पाल्मास के साथ 2 और बेटिस के साथ जो 2 हैं, even though he finished 6th with Betis, which is amazing. ठीक है, they scored 60, they conceded 61. अब चैलेंज ये है कि बारसा में आके वो अटैकिंग आउटपुट अपनी रखे लेकिन डिफेंस को भी शोर अप करे. What do you expect? और जनरली लाइक सेटियन का मुझे 1-2 साल से पता है, मैंने उसकी बेटिस की साइड्स वगैरह थोड़ी बहुत देखी हुई हैं, बट आई नो कि बहुत लाइक खूबसूरत फुटबॉल खेलते थे. सम वुड से ही इज़ द मुरिजियो सारी ऑफ स्पेन बिफोर पीपल स्टार्ट हाउंडिंग मी. आई जस्ट मीन बिकॉज के वो लोअर लीग से शुरू किया था और उधर ही रहा था, और अब जाके उसको बड़े क्लब का काफ़ी देर बाद एक्सपीरियंस मिला. मुरिजियो सारी इज़ अराउंड 60, ये भी 61 है. पहली बिग जो अब लास पाल्मास के साथ इसका रिकॉर्ड था 33.33 विन परसेंटेज, विद बेटिस इट वाज 42.55. एंड वी हैव टू बेयर इन माइंड के छोटे क्लब्स थे तो इनके साथ आप 60-70% नहीं कर सकते. एक चीज़ जो है कि बेटिस का इससे पहले रिकॉर्ड विन परसेंटेज थी 30 और इसके बाद है 32%. तो क्लियरली ही वाज अ गुड, मतलब ही हैड अ गुड टेन्योर देयर. अब उसामा, व्हाट डू यू थिंक कि साड़ी को जिस तरह हमने देखा था कि नेपोली एम्पोली वगैरह के साथ बहुत अच्छा था, उधर ही कुड पुट इन हिज क्राइफियन प्रिंसिपल्स. जॉन से क्राइफ तो नहीं, मतलब कि जॉन से भी उसके पोजिशनल प्ले प्रिंसिपल्स थे, लेकिन जब बड़े क्लब में आया चेल्सी में, एक सुपर क्लब विद सम सुपर स्टार्स जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत फ़र्क थी कि जीतना है और ये करना है, वहाँ पे थोड़ा मसला हुआ. इसका भी ये चैलेंज होगा. डू यू थिंक ही लाइक क्या होगा इस केस में? For a time being, the fans might find me too much critical, but I personally think he won't be much successful. Why do you say that? I am saying that because if we talk about the tactics employed by Qique Setien, he generally loves to play his teams in a 4-3-3 setup, ठीक है ना? And when they are defending, he uses a 4-1-4-1 setup. Okay, so जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा वो ये है कि he likes to play out from the back. Okay, he starts off from 4-4-2. जो इसके सेंटर बैक्स हैं वो कभी कभार तो बिल्कुल जैसे टॉटनहम का देखते हैं बिल्कुल बाईलाइन के साथ आते हैं बॉल पिक करने के लिए, या तो सेंटर्स आके इसके बॉल पिक करते हैं, बॉल लेंगे गोलकीपर से, या तो CDM है ना वो पीछे आएगा, वो बॉल लेगा. तो
पेशेंट बिल्डअप करता है, ठीक, पेशेंट बिल्डअप सपोर्ट करता है, और फिर बीच में एकदम ट्रांजिशन करते हैं। और इसकी गेम का ये है कि एक बार बिल्डअप चल रहा है तो 3-4-1-2 ये फॉर्मेशन एम्प्लॉय करेगा, और इसमें ये होगा जो आपके फुल बैक्स हैं ना वो आगे वो आपके वाइड फॉरवर्ड्स होंगे, ठीक है ना। 3-4-1-2 फुल बैक्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं, आपके 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स वाले अटैकिंग, एक CAM सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर और एक लोन स्ट्राइकर। इसमें होता ये है कि जब फुल बैक्स ओवरलैप करते हैं ना, तो जो आपके विंगर्स हैं, जैसे इस टाइम लिवरपूल में खेल रहे हैं, फुल बैक्स जब ओवरलैप करेंगे आपके विंगर्स इनसाइड आएंगे, उनको फ्री स्पेस मिलेगा। तो जनरली ये ट्राई करता था। और इसकी बैटर साइड में अंदर एक ये कॉमन थीम था कि फुल बैक्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो यूआकीन एक प्लेयर था इन उस वो साल पहले में, वेलेंसिया और होता साथ था। एक फाबियन रुइज, ये दो इनके मेन प्लेयर्स थे उस साल। फाबियन रुइज को फ्री रोमिंग रोल मिला था बिहाइंड द लोन स्ट्राइकर, और साथ यूआकीन एक विंगर था इनसाइड कट करता था। तो ये इनकी कॉमन थीम थी उस सारे उस सीज़न में। तो बेसिकली 4-3-3 वाइल डिफेंडिंग, और 4-1-4-1 वाइल डिफेंडिंग, एंड 3-4-1-2 वाइल अटैकिंग। सो इस केस के अंदर एक थी हमारे पास ये आती है कि आपको चाहिए फुल स्टेमिना फास्ट फुल बैक्स, ठीक है ना। अब अगर इसके केस में हम बार्सिलोना के पास देखते हैं, तो जॉर्डी अल्बा, आई पर्सनली थिंक ही इज़ एट द ट्वाइलाइट स्टेज ऑफ हिज कैरियर। आई डोंट थिंक he would have that much pace that he had to offer around 2 to 3 years ago। और अगर हम राइट और बैक फिर को दूसरी देखें, तरफ रोबर्टो है जिसकी उस तरफ पेस तो नहीं है। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। नहीं, रोबर्टो वो अच्छा प्लेयर है बट इट्स मतलब नॉट अच्छा, हिज लेकिन स्ट्रेंथ वो टू। इस सिस्टम में नहीं चल पाएगा, क्योंकि 3-4-1-2 के अंदर यू नीड अ हाई स्टेमिना, हाई रनिंग फुल बैक। सर्जियो रॉबर्टसन रोबर्टो इज़ वेरी गुड एट लाइक ब्रिंगिंग आउट द बॉल फ्रॉम बैक, प्लेइंग 1-2s विद द मिडफील्डर्स, उसके इसमें काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम देखें कि एक फुल बैक है कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग अप बॉम्बिंग डाउन, सर्जियो रोबर्टो इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ फुल बैक। और फिर हम आते हैं आगे विंगर्स के ऊपर। मेसी हम कह सकते हैं राइट विंगर है, लेकिन मेसी इज़ आई गेस नाउ 33। मैसी है, he कुछ he नहीं कह doesn't सकते। has that much pace to offer as he had like 4 to 5 years ago, so you cannot expect him to be like a fully लेकिन explosive मेसी, fullback for दिस now। इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स इंटरेस्टिंग एंड पीपल शुड रीड द मिगेल आर्टिकल बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन्ड द टैक्टिक्स रियली वेल। लेकिन उसने एक बात की थी मेसी के ऊपर, वो बात करता है, ही वाज लाइक कि मेसी एक वाहिद प्लेयर है जो मतलब कि जिसको सिस्टम से जो बाहर जा सकता है, मतलब जो अपनी मर्जी कर सकता है। तो आई थिंक कि समवन हु इज़ वर्किंग विद मेसी और वो कर रहा है, वो आई थिंक मेसी अपना लाइक सिस्टम से बाहर है, वो अपना करेगा। ही कांट बी रिस्ट्रिक्टेड टू के विंगर है और या कैम है जो भी है। तो उस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक एंड इट विद दिस कोट दैट सेटिन, लाइक आई डोंट नो इट वर्बेटम, लेकिन उसने ये कहा था आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल मैं अपने देहात में बकरियों के साथ चल रहा था और आज मैं मेसी के साथ मतलब ट्रेनिंग लीड कर रहा हूँ। सो दैट्स अ रैप फॉर दिस एपिसोड। Please subscribe, and if you like our episodes, tune in for more, and do leave a like on the video. Thank you so much, Usama, for joining us. Ismail, thank you. Until next time, bye bye. Good scene, yaar.